Hello student, जय जगन्नाथ. I am SAMBIT SIR, your psychology educator. आज हमें स्टार्ट करिवे जाउचे साइकोलॉजी रो महामाराथन. तो ये साइकोलॉजी रो महामाराथन क्लास रे हमें आगो कसुवा साइकोलॉजी एग्जाम रे सिलेक्टिव क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करिबा. तो कौन कौन सब हमरो 1 मार्क बा MCQ, कौन कौन इंपोर्टेंट 2 मार्क्स आउ कौन कौन 3 मार्क्स आ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आसीबो से सब हमरे डिटेल रे हमें एही वीडियो रे डिस्कस करिबा. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमरो प्लस 2 सेकंड ईयर रो फर्स्ट चैप्टर होची डेवलपमेंट और द लाइफ स्पैन ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट रु बहुत सारा क्वेश्चन आसी परिबो. तो डेवलपमेंट सहित पर्सनालिटी हमरो गोटे बीट रे रहूची तो बा गोटे यूनिट रे रहूची. तो ए दुईटा चैप्टर रो बहुत सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसी थाए जोथि के पिला माने टिके जदी थोरोली न पढी थांती बा प्रिपेयर न होई थांती तो टिके कंफ्यूज फेस करंती. तो ठीक अछि. सो चला हम स्टार्ट करिबा आज रो साइकोलॉजी रो महामाराथन क्लास रो क्वेश्चन डिस्कशन ऊपर. The first easiest question is the lifespan or the life begins at the time of dash. The first option is conception, second birth, and third fertilization. So the correct answer is life begins at the time of conception. So first A is correct. The second question is the duration of the prenatal period is dash days. Option is 270 days, 280 days, and 290 days. The correct answer is 280 days. Sometimes ए क्वेश्चन टी पिले माने बहुत थरो परिवर्तन करके पचारे बा पिला को कंफ्यूज करिबा पई विभिन्न टाइप रो टिके चेंज करके पचारे. जेमते कि डेवलपमेंट द ड्यूरेशन, व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रीनेटल पीरियड इन वीक्स. तो हमर केते वीक रे पचारि पारे. जदि केते वीक रे आसला देन इट्स 40 वीक्स. जदि केते मंथ रे पचारला देन यार आंसर होगा 9 मंथ 10 days. बट हियर द क्वेश्चन इज how many days or the duration of the prenatal period is dash days. So the correct answer is 280 days. Another question is the fertilized ovum is called as a dash. The option is zygote, embryo, fetus. So here the answer is zygote. Next, the newborn baby inherits dash number of chromosomes from his parents. Option is 44, 46 and 48. So the correct answer is option B, 46. एई क्वेश्चन रे भी पिले किछटा परिवर्तन करके पचारे सेम क्वेश्चन बट टिका हमको टेक्निकली बुझिबा पड़िबो. The question अछि कोन that the newborn baby inherits dash number of chromosomes from his parents. Dash number of chromosome. But जदि एठी पचारि थांता dash pair of chromosome then our answer आसी थांता 23 pairs. So pair और number भितरे confuse हबो नाही. Next question, the best age for a woman to have a child is in between dash to dash. Option is 18 to 21 years, 21 to 25 years, and 22 to 28 years. So the correct answer is 22 to 28 years. Because as we know, the actual age of actual motherhood is 22 to 28. It is an important question. The longest period during our lifespan is dash. Option is adolescence, adulthood, and old age. So the correct answer is adulthood. Next question, the dash combination results in a male child. Option is XX, XY, and YY.
So the correct answer is XY, because the XX chromosome possesses a girl child and the XY possesses a boy child. So the answer is XY. Next jiba hame personality chapter ku. So in the personality, the term personality is derived from dash word. Option is persona, mask, face and personality. So the correct answer is persona. Next question. The term self can be classified under three categories like the real self, the possible self and dash. The option is they self, myself and ideal self. So the correct answer is the ideal self. Another question. The outer self is also known as the dash. Option is real, external and ideal. So the answer is ideal. Next question. The first approach to study human personality is called dash. Option is type, trait and psychodynamic. So the correct answer is option A, type. Another question. Kramer's classification of a personality consists of asthenic, picnic and dash. The options are phlegmatic, athletic, sanguine. So the correct answer is athletic. Next question. The Jung's classification of a personality type includes extrovert, introvert and dash. Options are experts, genuine and ambiverts. So the correct answer is ambiverts. So Jung classified personality in three categories. One is introvert, extrovert and another one is the ambivert. So the correct answer is ambivert. G. Alport talks about three types of personality traits like secondary, cardinal and dash trait. Options are functional, autonomous and central. So the correct answer is central. Next question. According to Freud, the dynamic aspect of human mind consists of ego, superego and dash. The options are conscious, subconscious and id. So the correct answer is the last one, the id. Ebong ଆଉ ଗୋଟେ important information दबाको चाहिबी. The arts square तरफरु ଆମର +3 बा ग्रेजुएशन रो ऑनर्स कोर्स गुडा का स्टार्ट हबाको जाउची. तो साइकोलॉजी ऑनर्स जो माने नबाको चाहिबे तो से माने तळे दे जाइथिया नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे. तो साइकोलॉजी ऑनर्स सहित हमर अलग ऑनर्स रो भी फैसिलिटीज गुडा का अवेलेबल अछि. So if you are interested for getting admission in the art square, so please contact this number. Next question. Freud believed that unconscious state of mind consists about -% of our mind. Options are 70%, 80% and 90%. So the correct answer is 90% because as we know our 90% of mind is fully unconscious. So the correct answer is 90%. The ego is guided by dash principle. The ego is guided by dash principle. The option is pleasure, reality and morality. The answer is reality because ego is a balancing rod between the id and the superego. So it is guided by the reality principle of personality. Next question. The first 3 stages of psychosexual development of Freud consist of dash, oral, anal and dash. The option is latent, phallic and genital. The correct answer is the phallic. So these are the 5 psychosexual stages of development: the oral, anal,
phallic, latency and genital. So these are 5 stages. The third stage is phallic. So the correct answer is phallic. The book named by Interaction of the Dreams was written by dash. Option is Carl Jung, Freud and Adler. So the correct answer is option B, Freud. So the interpretation of dream is written by Freud. Another important question. According to Freud, dreams are connected with our dash, past, present and future. So the correct answer is present. Next question. The classical conditioning techniques was developed by dash. Option is Thorndike, Skinner and Pavlov. So the correct answer is Pavlov. Another important question. Reinforcement can be positive or dash. Option is neutral, negative and subjective. So the reinforcement is always positive or negative. So the correct answer is negative. Another important question is the client-centered therapy was developed by dash. Option is Freud, Watson and Rogers. So the correct answer is option C, Rogers. So Rogers introduced the client-centered therapy approach. Next question. The term projection literally meaning dash. So the option is throwing in, throwing out and being neutral. So the correct answer is the projection means throwing out. So the correct answer is throwing out. Another question is the word association test was introduced by dash. Jung, Cattell and Galton. So the correct answer is option C, Galton. Another question. The research ink blot test consists of dash standard symmetrical cards. Options are 10, 15, 20. So the correct answer is 10. The TAT or thematic apperception test was developed by dash. Options are Eysenck, Jung, Murray and Morgan. So the correct answer is Murray and Morgan. Next, let's discuss some important set type questions from the chapter stress. So the first question is stress is a dash emotional experience. So as we know, stress is a negative emotional experience. So the option B, negative, is correct answer. Second question, stress is an internal dash. Option is emotion, feeling and experience. So the correct answer is feeling. Third question, stress is dash. Option unavoidable, avoidable and abnormal. So the answer is avoidable. Stress is avoidable. Stress is caused by dash. Options is feelings, emotions and stressors. So as you know, stressors are the motivator or creator activators of the stress. So the correct answer is stressor. So stress is caused by stressors. Next question, the effect of stress can be positive and dash. Option is objective, negative and subjective. The correct answer is negative. Next question, Seeley's gas model of stress consists of dash phases. So the gas model is consist of dash phases. Option is 2, 3, 4. The correct answer is 3. Next question, stress dash our immune system. Option is increases, reduces, maintains. So stress हेले आमर immune system रा कौन घटे? तो as we know, the correct answer is
reduces. तो stress हेले हमारा immune system भी decrease हबो बा reduce हबो. तो correct answer is reduces. Next question, stress and illness are dashly correlated. Option is positively, negatively and proportionally. So the correct answer is positively correlated, because what is positive correlation? Increasing in one variable causes the decreasement in the another variable. So हमारा stress आउ illness को हमें जदि example वे रे नबा, stress जदि गोटे variable हुए आउ illness जदि गोटे variable हुए, तबे stress बढ़िले illness बढ़िबो, then stress कमिले illness कमिबो. These are positive correlation, means increasement in one variable is also increasement in another variable. And negative correlation हमें कोठी कहबा ना, increasement in one variable is causes decreasement in the another variable. These are the negative. गोटे बढ़िले गोटे कमिबो, एटा हला negative. बीटे जगह जदि समान direction में चलिबे, then this is the positive. So the stress and illness are positively correlated. Next question, stress has its root from our dash process. Option is thought, feeling and emotion. The correct answer is our thought process, the thought. Next question, stressors are the dash of stress. Option is motivators, receptors and activators. The correct answer is activators. Stressors are the activator of the stress. Next question, stress can be experienced at dash different level. Option is 3, 4, 5. So stress can be experienced at 3 level. So the correct answer is 3. Another question, eustress is also known as dash. Option is positive, negative and neutral. So the correct answer is positive. So eustress is always a positive stress. If the question is distress, then it is negative. Jodi question asithanta distress is refers to a dash stress, then we can say it is a negative stress. The eustress and distress with the difference है, eustress is always positive and distress is always negative. Next question, the gas model of stress was developed by dash. The gas model हमारा Hansley develop करथिले, so the correct answer is B, Hansley. Next question, action oriented coping is also known as dash. Option is emotion focused, problem focused, solution focused. So the correct answer is option B, problem focused. Next question, the 3 different styles including the physical, behavioral and dash aspect. The 3 different coping styles including the physical, behavioral and dash aspect. Option is perceptual, cognitive and emotional. So the correct answer is the cognitive. Next question, chronic stress dash our immune system. Option is increases, decreases, maintains. So the correct answer is decreases. Next question, there is dash correlation between the personality dimension and stress. Option is positive, negative and neutral. The correct answer is positive correlation. Stress is a dash killer. Option is suspicious, open, silent. The correct answer is silent. Next, some important questions from the chapter group and leadership. The question is, a group is born out of dash. Option is interaction,
motivation, and change. So the correct answer is interaction. Second question, group cohesive implies dash feeling among group members. Option is I, we, my. So the correct answer is we. Next, moral is a dash phenomenon or process. Option is social, group, and political. The correct answer is group. So moral is a group phenomenon. Next, family is a dash group. Option is formal, informal, and primary. The correct answer is primary. The in-group and out-group feelings dash the morale of a group. Option is increases, decreases, and neutralizes. So the correct answer is decreases. Next question, the autocratic and democratic leaders differ from each other with regard to the dash. Option is the amount of power, the use of power, and type of power. The correct answer is the use of power. So as you know, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडर का भितरे डिफरेंस एतिकी कि सेमाने पावर को किए केमिति यूज करूछन्ती तो सेही दृष्टिरे दुई जण डिफरेंट. नेक्स्ट, पीपल जॉइन सेकेंडरी ग्रुप बाय डैश. ऑप्शन इज फोर्स, चॉइस, रूल्स. तो द करेक्ट आंसर इज चॉइस. सेकेंडरी ग्रुप टा को हमर समस्त जिहा चॉइस रे ही जॉइन करि थांती. सो इट डिपेंड अपॉन द चॉइस, पर्सनल चॉइस. Next question, a political party is a dash group. Option is primary, secondary, and informal. The correct answer is secondary. Primary groups are characterized by dash relationship. Option is personal, impersonal, and social. The correct answer is social. Leaders operate in a dash context. Personal, social, and cultural. The correct answer is social. The democratic type of leadership is also known as dash type of leadership. The option is participatory, non-participatory, free reign. So the correct answer is participatory leadership style. Next question, the nurture and task leadership style was proposed by dash. Option is Alport, J.B.P. Singha, C.B. Tripathi. The correct answer is option B, Singha. Then next question is, autocratic leaders are usually dashed by people. Option is like, dislike, and accepted. So the correct answer is autocratic leaders are disliked by people. All successful leaders are dash in their approach. Option is rigid, flexible, and demanding. So the correct answer is flexible. Next question, charismatic leaders reflect dash personality. Option is dominant, weak, magnetic. So the correct answer is magnetic. Next question, leaders dash operate in the same way. Option is do not, usually. The correct answer is do not. Leaders do not operate in the same way. Next, some important questions from the chapter counseling. The first question is, the counseling literally means dash. So the counseling means to direct, to advise, or to instruct. The correct answer is to advise. Second question, the counseling as a technique has its roots from the works of dash. Option is Watson, Freud, and Adler. The correct answer is Freud. Third question,
The main purpose of counseling is to promote the health, wellness and dash of people. Option is relationship, goodness, peace. The correct answer is option B, goodness. Today, more than dash of the people are suffering from psychosomatic diseases. Option is 80%, 70% and 60%. The correct answer is option A, 80%. So these are some important short type questions from the psychology chapter, different chapters of psychology. So let's start some important 2 and 3 marks for your counseling examination. So in the first chapter, one of the important question is, what are the basic difference between growth and development? तो ग्रोथ कहले आमे कोन बुझुचे और डेवलपमेंट कहले आमे कोन बुझुचे और दीटा भितरे डिफरेंस कोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सपोज हमर बहुत टाइम रे कोन करे ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स गुडा पचार दे, एनी 2 or 3 characteristics of adolescence or any 2 or 3 characteristics of childhood. So we must focus on the at least 5 characteristics of each developmental stages. So one of the important question is any 2 characteristics of adolescence. Next question is, what is RH incompatibility or what is RH factor in the prenatal development? Next question, what are the important factors affecting the prenatal development? So जदि एटा पचार थिबो कि any 2 factor, any 3 factor, then एटा 2 मार्क 3 मार्क रे हम लिखि परिबा. Otherwise it will be a long type question. What are the factors affecting of prenatal development? It is a long type question. जदि पचार थिबो कि any 2 kind of factors like age of the mother, RH factor, nutrition or uterine crowding. So जदि 2-3 फैक्टर पचारिछि ताले हम सेटा को 2 मार्क्स बा 3 मार्क्स से लिखि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन cephalocaudal development and proximal-distal development? एटा बारंबार पिले माने कहिछि, एटा ऑलवेज इंपोर्टेंट. व्हाट इज cephalocaudal and what is proximal-distal? These are 2 laws of developmental order. दुईटा लॉ इटा 2 laws of development, proximal-distal and cephalocaudal. Next question, what is personality? Personality कहले हमें कोन बुझुचे? Personality शब्दटी कोनठो आसीची, तार डेफिनेशन सहित हमको लिखिबार अछि what is personality. Next question, difference between extrovert and introvert. तो extrovert और introvert ऊपर यूंग मत देइथिले. तो यूंग को अनुसारे extrovert रो characteristics गुडा को कोन, introvert रो characteristics गुडा को कोन, से गुडा हमको मेंशन करिया छै at least 2 to 3 point रे for 2 marks. If it is a 3 mark question, then we must have to write at least 6 points. Next question is difference between central and cardinal trait. तो central trait कौन, cardinal trait कौन, ता भितर भी difference भी आसी परिबो. Next question पिला बने, what are the big 5 personality trait? Big 5 personality trait बा हमरो ओसेन मॉडल जोटा कह जाउची. बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल के देइथिले एवं कोन कोन सेत्रे पॉइंट्स गुडा को अछि. ओसेन मॉडल भी ताको कह जाय. तो व्हाट आर द बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल? एटा भी गोटे इंपोर्टेंट 3 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी परिबो, 2 मार्क्स रो भी क्वेश्चन आसी परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप थ्योरी एंड व्हाट इज ट्रेट थ्योरी, और व्हाट इज टाइप अप्रोच एंड व्हाट इज टाइप अप्रोच? व्हाट इज टाइप अप्रोच एंड व्हाट इज ट्रेट अप्रोच? एटा भी 2 मार्क रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक प्रोजेक्टिव टेक्निक कहले हमें कौन बुझुचे और व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक रो कोन यूजेस रही थाए केउटी एटा यूजेस हुए तो मोस्टली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर मेनली यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग और इन द हॉस्पिटल्स सो व्हाट आर द यूजेस भी पचरी पारे हमर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स रो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रेस सिंपल एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुडा को पिले व्हाट इज स्ट्रेस व्हाट इज स्ट्रेसर व्हाट आर द relationship between the stress and stressor so these are some important questions from the chapter stress what is stress and second question is difference between stress and stressor stress और stressor भितरे difference कौन next what are the coping strategies of stress stress सहित हम केमिति cope करि परिबा what are the coping strategies तो एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट रो स्ट्रेटजीज हमको मन रखियो पड़िबो फॉर 2 मार्क और 3 मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ग्रुप कहले हमें कोन बुझुचे तो एज वी नो व्हेन मोर देन वन पीपल आर कमिटेड इन ए पर्टिकुलर प्लेस having a common goal they are called as a group एक रु एकाधिक लोक गोटे निर्दिष्ट जगह रे एकत्रित हेले सेमानकर गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य थिले आमे कहि परिबा सेमाने होचंती गोटे ग्रुप रो सो व्हाट इज ग्रुप कहले कोन बुझुचो देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप कोन कोन सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप अछि व्हाट इज ग्रुप फॉर्मेशन अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रुप फॉर्मेशन कहले कोन बुझुचो so these are some important questions from the chapter group next question what is leadership कहले हमें कोन बुझुचे what is leadership what are the characteristics of leader गोटे लीडर रो कोन कोन characteristics रहिबा दरकार and what are the types of leaders केते प्रकार रे लीडर्स अछंती ऑटोक्रेटिक हैला डेमोक्रेटिक हैला charismatic हैला नर्चरल टास्क लीडरशिप स्टाइल हैला तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर और व्हाट आर द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एटा पहिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर लॉन्ग टाइप एंड 2 to 3 मार्क पाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ए मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप रु आसीबो किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेमते कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट कहले कोन बुझिछो ग्लोबल वार्मिंग कोन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन कोन सब पॉल्यूशंस अछि एयर पॉल्यूशन हैला वाटर पॉल्यूशन हैला नॉइज पॉल्यूशन हैला सॉइल पॉल्यूशन हैला व्हाट इज क्राउडिंग जनगहली बा क्राउडिंग कहले कोन बुझुचे तो दीज आर सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस some another important questions may become like what are the effect of man-made environment on the natural environment हमर मनुष्यकृत परिवेश द्वारा प्राकृतिक परिवेश रे कोन कोन क्षति पडुची बा कोन तार इफेक्ट आसुची then what are the effect of different pollutions like what are the side effect of air pollution what are the side effect of noise pollution so these are some important questions from the chapter man environment relationship next question what are the different stages of counseling ro कोन stages रहिछि counseling process ro what are the different stages of counseling process next characteristics of counselor what are the characteristics of an effective counselor गोटे इफेक्टिव काउंसलर रो कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स हबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एंड काउंसलर कहा को हमें काउंसलर कहिबा कहा को हमें क्लाइंट कहिबा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइंट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर so these are some important questions from the counseling chapter next what is anxiety disorder
some important questions are: what is anxiety disorder? What are the basic difference between normality and abnormality, or what is abnormality? Abnormality कहले कौन बुझुचे बा abnormal कहले हमें कौन बुझुचे? What is abnormal? The abnormal is deviate from the normal. Okay, so normal थारु जे deviate करूची बा जे social rules regulation को violate करूची तक हमें कहूचे abnormal. So basic question आसी पारे हमर कोन ना what are the difference between normal and abnormal, or what is abnormality? Okay, then what are the psychological disorders like psychological disorders? What are the disorders like anxiety disorders? Then what is GAD, generalized anxiety disorder? What are the signs and symptoms of the generalized anxiety disorder? Next question ऐसे पड़ेगा, what is OCD, obsessive compulsive disorder? What is obsessive compulsive disorder, and what are the sign and symptoms of obsessive compulsive disorder? Next question is, what are the symptoms of depression? Depression रो कौन कौन symptoms और signs रही छी? What are the signs and symptoms of depression? Then what is bipolar disorder? What is bipolar disorder? Bipolar disorder कहले हमें कौन बुझुचे? Then what are the types of phobic disorder? Phobic disorder कहले कौन बुझुचे? तार different types. These are some important question पिले माने. आको किच्छे भी skip करिवो नाही. So phobic disorder कहले कौन बुझुचे? Phobic disorder types कौन? तार symptoms कौन? Different type accordingly तार symptom. तेगुड़ा काम को भल से देखिबा को ही पड़िबो. Next question, important question from the chapter therapy or therapeutic approach रो आसीची. What are the different behavioral techniques? कौन कौन सब behavioral therapy रो different techniques अच्छे? What are the different techniques of behavioral therapy? Next question is, what is client center therapy? Client center therapy कौन किए से देई थिले? हमें समझ जानी चाहिए एटा कार्ल स्ट्रोजर्स देई थिले client center therapy. कौन कौन एतरे important points अच्छी जेमते unconditional positive regard हैला, active empathy हैला. तो these are some important points comes under the client center therapy. Next question is, what is CBT? Cognitive behavioral therapy. CBT. What are the uses of CBT? What is CBT? What are the uses of CBT? CBT कहले कौन बुझुचे हमें? Cognitive behavioral therapy. Then what are the uses of CBT? कोउठी एटा यूज होउची. Then what is RET? Rational emotive therapy. Rational emotive behavioral therapy REBT किए देइथिले एवं कौन यार uses. Next question, what are the different drug therapy? Drug therapy बा medical therapy रे हमें ठीक है भी देखिथिबा. What is antipsychotic drug? Antipsychotic drug कोठी यूज हुए. Antidepressant. What is antidepressant? Antidepressant कोठी यूज हुए. So these are some important questions for 2 and 3 mark. Next, some another important questions from the statistics chapter. जेमते कि what is mean? Mean कहले हमें कौन बुझुचे? What is mode? What are the uses of mean? What are the uses of median? And what are the uses of mode? तो बेसिक तीनटा जिनस हमको देखिबा पड़िबो स्टैटिस्टिक्स रो मीन, मीडियन, मोड. तार यूजेस कोन आ तार डेफिनेशन कोन फॉर 2 मार्क. नेक्स्ट फॉर लॉन्ग टाइप, फर्स्ट पिला माने लॉन्ग टाइप पे मु एडवाइस करबी समस्त स्टैटिस्टिक्स से भलो से फोकस करिवो, बिकॉज़ लॉन्ग टाइप हमर 5 मार्क रा आसुची. हमको एटलीस्ट 5टा करिवार अछि, सॉरी एटलीस्ट 3टा करिवार थिबो. तो स्टैटिस्टिक्स भी कंपलसरी समस्त ऐड करिवो निजरो लॉन्ग टाइप रे. सब बेले फोकस कर पिले माने प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन गुडा को प्रैक्टिस करिवा पई
प्रीवियस ईयर 2 ईयर 3 ईयर क्वेश्चन रे आसीथिबा स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो से लेवल रो ही स्टैटिस्टिक्स आसीबो स्टैटिस्टिक्स के डर नहीं स्टैटिस्टिक्स को प्रैक्टिस करो देन जीवा सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप ऊपर तो सब्जेक्टिव लॉन्ग टाइप ऊपर हमरो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि बहुत थोड़ा एग्जाम रे आसे सेटा को पिले माने सब बळे फोकस करथिबो लॉन्ग टाइप न आसले भी तादर शॉर्ट टाइप बहुत थोड़ा आसे शॉर्ट टाइप भी बहुत से आसीबो तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट रो कोन फैक्टर्स गुडा को अफेक्ट करूची प्रीनेटल डेवलपमेंट को जेमति एज ऑफ द मदर हला डाइट ऑफ द मदर हला नरिशमेंट हला बा न्यूट्रिशन ऑफ द मदर हला यूट्रिन क्राउडिंग हला आरएच फैक्टर हला देन मैटरनल डिसऑर्डर्स हला देन like teratogene factor hela ba drugs consumed by the mother kon सब drug affect करूची तो these are some factors जोटा कि हमरा prenatal development को affect करूची तो सेटा long type पे भी फोकस करथिबो नेक्स्ट आ गोटे long type कहबी chapter 1 रो बा development रो जोटा कि तमरो what are the stages of different stages of prenatal development different stages of प्रीनेटल डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेजेस रो बा प्रीनेटल डेवलपमेंट रो कोन कोन स्टेजेस रहिछि तीनटा मेन स्टेजेस रहिछि ता अंडर रे भी बहुत सारा दिन से आसुछि सो तीनटा स्टेजेस सहित ता अंडर रे जो स्टेज सब स्टेज गुडा का आसुछि जेंते एक्टो लेयर हला एक्टोड्रम मेसोड्रम एंडोड्रम तो से गुडा को फोकस करिवो शॉर्ट टाइप पे आ लॉन्ग टाइप पे तो एटा भी लॉन्ग टाइप पे भी फोकस करिवो नेक्स्ट पिला माने कहबी एई चैप्टर किछटा क्वेश्चन मिस हे गला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेमिति कि व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन कहले कोन बुझुचे व्हाट इज हाउ अनदर क्वेश्चन इज हाउ कंसेप्शन अकर एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थोड़ा एग्जाम रे आसे देन व्हाट आर द actual or suitable age of the mother और एटा गोटे 2 मार्क रा आसी परिबो actual motherhood age what are the actual motherhood age तो शॉर्ट टाइप आसीबो 2 मार्क भी आसी परिबो then another long type is what are the 6 stages of development रा कोन 6टा स्टेजेस रहिछि so most of the time रे गोटे क्वेश्चन आसे what is projective technique and what are the projective methods used or comes under the projective assessment तो पर्सनालिटी असेसमेंट रो दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा गोटे हला प्रोजेक्टिव असेसमेंट आ गोटे हला साइकोमेट्रिक असेसमेंट तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट को भी फोकस करबा ता सहित प्रोजेक्टिव असेसमेंट को बा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स व्हाट आर द डिफरेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स दुईटा क्वेश्चन को हमें फोकस करिबा नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेड थ्योरीज गुडा को भी फोकस करिबा कोन कोन सब ट्रेड थ्योरी अछि एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी परिबो बा अदर शॉर्ट टाइप बहुत सारा आसी परिबो नेक्स्ट व्हाट इज ग्रुप एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप कहले कोन बुझुछे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप प्राइमरी हला सेकेंडरी हला ऑटोक्रेटिक ग्रुप हला डेमोक्रेटिक ग्रुप हला देन तमरो अलग जेते सारा ग्रुप अछि टाइप्स ऑफ ग्रुप व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप अछि तो टाइप्स ऑफ ग्रुप को भी फोकस करिबा another important questions from the psychological disorder is what are the sign and symptoms of anxiety disorder and what are the different types of anxiety disorder हमें कहले कोन बुझुचे तार टाइप्स कोन और तार साइन सिम्पटम्स कोन anxiety disorder भितर हमरा आसुची कोन ना GAD आसुची OCD आसुची phobic disorder आसुची so these are some common anxiety disorders
नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि एथरो आसीबार बहुत सारा चांसेस अछि कि व्हाट इज मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर कहले कोन बुझुचे और व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन ऊपर भी बिले माने फोकस करबो कारण बे रिसेंट टॉपिक डिप्रेशन हम जानु छे कि मोस्ट ऑफ द टाइम रे डिप्रेशन जो बहुत सारा सुसाइड केस होउची तो डिप्रेशन ऊपर भी फोकस करथिबो। मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन ता सदा बाइपोलर डिसऑर्डर। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर चैप्टर। Then what are the effects of man-made environment on the natural environment, or what are the effects of climate changes on human civilization? दीटा important question आसी परिबो, essay type of question रहबो ए दीटा। मैन मानकर बा ह्यूमन मानकर चेंजेस जोगु हमर नेचुरल एनवायरनमेंट रे कोन कोन चेंजेस होउची बा कोन कोन इफेक्ट पडुची बा हमर चेंजेस जोगु हमर कोन क्लाइमेट चेंजेस जोगु हमर ह्यूमन मानक ऊपर तार कोन कोन इफेक्ट पडुची एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एटा को भी फोकस करिथिबो। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप्स। आई होप समस्त मनकर एग्जाम भल रे जाउथो, तम प्रिपरेशन भी बहुत भल थिबो, समस्ते एग्जाम को भी भल से प्रिपेयर हेकि जाउथबा भल भी करिवो। सो कहि रखिबा चाहिबी जदि वीडियोटी भल लागिथिबो ताले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिवे। जदि किछि डाउट थिबो ताले कमेंट साहाय्य रे पचारि परिबे। एवं आ गोटे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दबाको चाहिबी द आर्ट स्क्वायर तरफ रु हमर +3 बा ग्रेजुएशन रो ऑनर्स कोर्स गुडा का स्टार्ट हबाको जाउची। तो साइकोलॉजी ऑनर्स जो माने नबाको चाहिबे तो से माने तळे दे जाइथिया नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे। तो साइकोलॉजी ऑनर्स सहित हमर अलग ऑनर्स रो भी फैसिलिटीज गुडा का अवेलेबल अछि। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर गेटिंग एडमिशन इन द आर्ट स्क्वायर, so please contact this number. Thank you.